Hello Java developers. Sir, exciting video of Java development series. We are solving 500 programs of Java in this series from beginner to advanced level. Okay, we are solving more string programs right now. And our question problem is find substring. This is our first question problem of more string programs. So let's find out substring. Okay, now we are in VS Code and let's create a file inside this. This file name is substring.java. Okay, go inside this file and increase the size of code editor. Okay, first we're gonna create a class, public class, and class name is always be same as your file name. So substring and create main method inside this main method, that is public static void main, and then create scanner class object. So scanner sc equal to new scanner and system dot in, and close this by semicolon, and import scanner. So press enter and scanner class is imported. Okay, then we gonna take a string. So just print enter a string and plus, sorry, string str equal to sc dot next line semicolon, and remove this ln from this place. And what we want to take substring. Okay, so how do we find out? We take a string as an input. After that इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? सब स्ट्रिंग का यूज करेंगे इसके लिए. सो प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. तो सबसे पहले एंटर कराएंगे हम क्या, स्टार्ट इंडेक्स या स्टार्टिंग इंडेक्स, जहाँ से हमें प्रिंट कराना है वो स्टार्टिंग इंडेक्स. तो इंडेक्स तो हमारी इंटीजर टाइप की होगी. इंट स्टार्ट इक्वल टू st डॉट नेक्स्ट इंट सेमीकोलन, एंड देन अब स्टार्ट इंडेक्स से हमें स्टार्ट करना है इसको, तो क्या करेंगे, अरे स्ट्रिंग और सब लेंगे एक वेरिएबल टू स्टोर स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग फ्रॉम स्टार्ट. Okay, and then we gonna print this. So system dot out dot println and sub string is colon and plus sub, so it will print substring. And we gonna add original string too. So print system dot out dot println original string colon and plus string that we take as an input. Okay, now run this program. Enter a string, that is Java programming, और स्टार्टिंग इंडेक्स हम क्या लेंगे 5. तो ये हमें प्रिंट कर देगा 5 इंडेक्स के बाद, जैसे कि जावा 0 1 2 3 4 एंड दिस इज अवर 5 इंडेक्स. तो 5 से प्रिंट कर देगा प्रोग्रामिंग. तो ये हमारा प्रोग्रामिंग है. अगर हम फिर से रन करें, यहाँ पे लेते हैं हम पाइथन प्रोग्रामिंग, तो भी ये हमें प्रिंट करेगा पी से प्रोग्रामिंग से ही, बट पहले एक स्पेस लेगा. क्या करते हैं, पाइथन हेलो जावा प्रोग्रामिंग. ओके, प्रेस एंटर. एंटर स्ट्रिंग इनपुट. ओके, स्टार्टिंग इंडेक्स हम क्या लेंगे 5 ही ले लेते हैं फिर से. तो ये प्रिंट करेगा जावा प्रोग्रामिंग, एंड यहाँ पे एक स्पेस भी उसने प्रिंट किया होगा, क्योंकि हेलो में ऑलरेडी हमारी 0 to 4 कंप्लीट हो जाएंगी इंडेक्स. ओके, so this is a way to print substring, and now use different method to find out, that is remove this stuff. एंड इसमें अब हम यूज करेंगे एंड इंडेक्स ऑल्सो. कहाँ पे हमें एंड करना है अपनी इंडेक्स को. तो स्ट्रिंग, सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एंड index colon. Remove this ln right now and from here also. Okay, and this is also integer type int and equal to sc dot next int semicolon. Okay, end string. And now same method like
string sub equal to string dot सब स्ट्रिंग यानी यहाँ पे हम दो स्ट्रिंग लेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स स्टार्ट कॉमा एंडिंग इंडेक्स दोनों इंडेक्स and close this by semicolon and now we gonna print. So first we gonna print original in original string, so original string colon, that is str, and now string, okay, sub string plus sub, okay, तो ये प्रिंट कर देगा सब स्ट्रिंग. तो एंटर और ये ओके एंटर अ स्ट्रिंग. सो वी गोना टेक अगेन जावा प्रोग्रामिंग. अब हम स्टार्टिंग इंडेक्स क्या लेंगे जीरो, मीन्स जीरो से प्रिंट करेगा, और एंड इंडेक्स लेंगे हम फाइव, तो प्रिंट कर देगा हमारा जावा कुछ इस तरह से. So this is a way to use starting and end index to print substring, okay, of a string. So this is our program to find out substring. So thanks for watching. Please like, share, and subscribe if this video is helpful for you. We will meet in our upcoming video of Java 500 program series. Thanks for watching.